Sometimes the story of one village can show the path to an entire nation. Let me take you through two villages. First, Ghat, where illegal mining continued to swallow lives, and the other, Chimravli, where the forest has brought back life again. Ghat was once a home to forest and fertile fields, but today only dust and fear remain, with no sustainable jobs and no secure future. Findings showed increase in soil erosion, water going deep, and lead and mercury levels found significantly higher than the safer limits. On visiting a CHC, I myself witnessed a spike in respiratory and waterborne diseases and the cases of silicosis. Forest on one side and the illegal mining mafias on the other, Ghat became a battlefield. There were 20 plus violent encounters, and the forest patrols were ambushed and the foresters were attacked. But just 10 kilometers away, a different story was unfolding. In Chimravli, the forest was finding its way back. The site, once equally degraded, became a symbol of restoration. The land was healing, and so were the people. Let's hear the success story from Forest Department and local community leaders. यहाँ जो इलीगल माइनिंग होती थी उससे ये जो ग्रामवासी थे चिमरावली वाले ये बहुत ज़्यादा परेशान थे मैडम। यहाँ ये ट्रैक्टर वाले जो खनन करता है ये शराब पी के इनके गाली गलौज ऐसे ही बोलते थे आपस में। यहाँ साधन लेके जाते थे तो इनके बच्चों को मवेशियों को भी ये डर भय रहता था एक्सीडेंट वगैरह का होने का। हमने इसमें मार्च 2023 तक ये एडवांस वर्क किया। उसके बाद 24 में जुलाई में इसमें प्लांटिंग की। ये जो क्षेत्र है मैडम इस साइड में हमने यहाँ की ये जो प्रजाति लगाई जो कि आपके सामने है। कुछ ऊपर जो है नाव में हमने चेक डैम से बनाए, नीचे ट्रेंचेज की खड्डे खोदे और अर्दन डैम भी नीचे में बनाए गए। मैडम यहाँ बहुत तगड़ा खनन होता था, इसलिए हमने लिख के दी फॉरेस्ट वालों कि इस खनन को बंद होना चाहिए। रात दिन ट्रैक्टर घूमे यहाँ और ब्लास्टिंग हुआ। फिर इसमें काम किया है तो हमने इसमें मजदूरी करी है, काम चालू किया। जब इसमें खड्डा, ट्रेंच, दीवार, चेक डैम, मिट्टी का, पत्थर का, फिर इसमें पेड़ पौधे लगाए हैं तो अब हमको इतना फायदा होगा, मजदूरी भी मिली है और अभी हमें प्लांटिंग भी सही होगा। अब इसमें सब ट्रैक्टर, खनन उनन, बकरी छेड़ी सब धन बंद होगा। Soil organic matter increased and the local people started earning from nurseries and NTFPs. These are not just two villages, they are two directions, one leading to collapse and the other to community-led conservation. The story of Chimravli shows us that what is lost can be found again. For a lasting change, restoration must go beyond planting trees. It must plant opportunities, because in places like Alwar, where illegal mining hasn't just stripped the soil but the soul of the communities, therefore blanket ban will not work. What we need is a new path, a path of regulated, sustainable, low-impact mining guided by clear ecological limits, while restoring traditional water bodies, investing in health and creating dignified alternative livelihoods. So, let's choose forest, let's choose future.